हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। पेरेंटिंग के ऊपर पिछले 2 हफ्ते में काफ़ी बकवास आप लोगों ने सुना है। हम अपने बातों को बकवास ही बोलते हैं क्योंकि सब लोग काम की बातें करते हैं ना, तो हम लोग जैसे काम की बातें कहेंगे तो हम लोग प्रेशर पे आ जाएंगे। इसलिए हमारा जो बातें होगा हर संडे को वो बकवास होगा 5-7 मिनट के लिए, लेकिन उसमें हम लोग अंदर ही अंदर काम की बात कर लेंगे। तो पेरेंटिंग के अंदर बहुत कुछ हमारे पास फीडबैक भी आ रहा है। उसी के तहत बाई चांस एक वीडियो मेरे पास आ गया जिसमें मैंने देखा कि कोई कह रहा है कि एक रेस का घोड़ा है और उस घोड़े को इतना चाबुक से मारता है उसका मालिक ताकि वो तेज दौड़े, पर घोड़े को ये समझ में नहीं आता है कि ये मुझे मार क्यों रहा है, मैं तो दौड़ रहा हूं। और वो मार से बचने के लिए और तेज दौड़ता है और अंत में जो है वो जीत जाता है। हालांकि हम अपने बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि हम लोग बच्चों को प्रेरित करें कि और मेहनत करें। कैसे और मेहनत करेंगे और उससे क्या बेटर होगा ये उनको समझाएं, और वो जो मेहनत करेगा या वो उनको जो मेहनत करने के लिए हम लोग बोलेंगे उसमें खुद भी शामिल हो। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि विजन किसके पास आना चाहिए। जैसे उस जॉकी के पास विजन था कि मेरे घोड़े को मुझे अव्वल नंबर पे लाना है, तो बिल्कुल उसी तरह हमें एज पेरेंट्स विजन फिक्स करना है और उस विजन को इंड्यूस करना है बच्चों पे, या फिर हमारे बर्ताव या हमारे समझाने से इनकलकेट होना है कि बच्चा समझे कि ये विजन मेरा है। या फिर अगर स्मार्ट बच्चा है, बहुत हाईली फोकस्ड है, तो उसके जो विजन है उसको भी हम लोग अपना सकते हैं और उस विजन को अचीव करने के लिए बच्चा कैसे मेहनत करेगा ये प्लान भी हमें कर देना चाहिए उसके साथ बैठ के। और ये नहीं कि हमने प्लान बनाया उसको उस पर थोप दिया, उसके साथ बैठ के प्लान करना होगा या फिर उसको समझाना होगा कि ऐसे अगर हम लोग प्लान करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे हम लोग अपने विजन पे, विजन अचीवमेंट हो जाएगा, गोल पे हम लोग पहुंच जाएंगे। और एक तरीका है कि एक बार हमने अपने बच्चों के साथ अगर डिसाइड किया, उसकी मदद करना चाहा इस बारे में, इसके बाद किसी और एक्सपर्ट के पास, जनरली वो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जाके उनको समझाएं कि हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि ये ऐसा हम लोग करेंगे और उसके लिए हम लोग इस तरीके से अपना जो है स्टेप जारी रखेंगे टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। तब जाके वो हमें बोल सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते तब अच्छा होगा, बिकॉज दे आर इनटू दिस डोमेन। टीचर्स का एक एडवांटेज क्या है कि बहुत बच्चों को वो अपने मुकाम तक पहुंचा देता है, तो उनके पास तजुर्बा होता है, एनालिटिकल एबिलिटी होता है। हर पेरेंट्स के पास हो सकता है ये ना हो, तो हम लोग अगर कहीं मुश्किल में गिरे या फिर हमारे प्लानिंग में एनालाइजिंग ऑफ द सिचुएशन एंड देन बेस्ड ऑन द सिचुएशन प्लानिंग व्हाट टू डू, प्रिपेयरिंग द स्ट्रैटेजीज, ये अगर हमारे पास नहीं है तो हम मदद ले सकते हैं टीचर्स का या फिर करियर गाइड का। आजकल बहुत तरह के हैं, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह भी है। तो ये सारा काम करने के बाद हम जो वो स्टेप्स लेंगे, एक्चुअली बच्चा वो स्टेप्स लेगा, लेकिन बच्चे को हमें पूरी तरह से मदद करना है, सपोर्ट देना है। यही था मॉरल ऑफ द स्टोरी कि घोड़े को जॉकी चाबुक मारता है और घोड़े को समझ में नहीं आता है बिकॉज उसकी आईक्यू तो कम है, लेकिन हमारे बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हम जितना मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी या उतनी ही आसान तरीके से हम अपने मिशन को अचीव कर सकते हैं। बिकॉज वी नीड टू टेल देम, आई मीन आवर चिल्ड्रन, दैट द वर्ल्ड आउटसाइड इज वेरी टफ। कोई भी आपको 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनी स्पेस। तो आपको मेहनत करना है और अपनी जगह बना लेना है दुनिया में। इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, देन यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इसके तहत हमने एक छोटा सा वीडियो कलेक्ट किया। प्लीज एंजॉय द वीडियो एंड बी हैप्पी पेरेंट्स एंड नेवर बी टीचर्स, एज आई सेड अर्लियर। दे आर facing the teachers in the school, so parents must not be teachers.
Do not let them face any teacher back in home. We are parents, we will remain as parents. ताकि वो ओपन अप करे हम पे, सब कुछ बताए और हमारे सपोर्ट से उसकी ज़िंदगी और या उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो। तो आज के बकवास में इतना ही। खुशियाँ बिखेरते रहिए, खुशियाँ बटोरते रहिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है। घोड़ा को दर्द होता है। वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार, तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे। Let's take a moment to imagine that bundle of joy you once held in your arms has now grown to be a young adult. What traits would you like to see in them? Happy, healthy, and successful? These are the most common hopes every parent has for their child. Many of us adopt different parenting styles in hope to achieve this same outcome. But not all strategies are created equal. In fact, there are some strategies that will not lead us to that goal, and yet many of us might unknowingly be doing these things. Meanwhile, there are some strategies that are absolutely vital towards raising happy, healthy, successful kids that we might be missing out on. First of all, let's talk about the pitfalls. Who knew there were even pitfalls when raising kids? The Cambridge Dictionary describes the word pitfall as a likely mistake or problem in a situation, and a problem used especially about problems that may happen in the future. This shows that if we don't take note of these now and make changes, it can affect the way our kids grow up and the type of adults they become. Here are 7 pitfalls we should take note of. Number 1. Shielding the child from responsibility. She's too young. It's faster to do it myself. He'll learn when he grows up. Have you ever found yourself feeding these thoughts? Whether they come out of your love for your child or for your own convenience, these thinking patterns will hinder your child from taking responsibility. Your child will never get the chance to learn how to become a responsible adult. Number 2. Preventing them from making mistakes. It is never easy for any parent to sit back and watch their child make mistakes. From making sure their shoes are on the right side, to later when the child has to make more important decisions in life, parents have the tendency to provide as much support as they can to try and prevent their child from making mistakes. But making mistakes and learning to bounce back from them is just part and parcel of our journey towards success. That's why the Chinese saying goes, failure is the mother of success. Making mistakes allows the child an opportunity to do some self-reflection and to learn to improve and do better. It does hurt a little, but your child will come out stronger. Number 3. Suppressing their emotions. You're fine. It's just a small matter. Stop crying. Are these your responses to your child's big feelings? In our attempts to comfort our child, we often find ourselves focusing on the outcome rather than the process. When strong emotions get shown in a big way, our ultimate goal is to put a stop to the strong emotions. But the process is actually what's more important if you want your child to become emotionally strong. Talking about feelings, recognizing them, allowing them to express their feelings, talking about the triggers and the coping strategies are some of the practices to help our children in regulating their own emotions. Number 4.
making the child believe they have no control over their situation. Did your parents ever tell you that life is never fair and you just have to live within your means? Instead of dreaming of a trip to Disneyland, your parents may have asked you to be grateful with what you have. Now, don't get me wrong, gratitude is always a good practice, but that doesn't mean that we have to settle for less. You've probably heard this quote before: life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Empowering children to take charge of their lives is always better than telling them there's nothing they can do about their situation. Number 5, being overprotective. It's a parent's nature to have the desire to protect their little ones from any harm, but we may go a little too far when we are shielding our children from every single negativity they might face in their daily lives. Let's face it, life is never smooth sailing. Allowing your child to face challenges and adversities will only help your child to become a resilient adult. Number 6, expecting perfection from the child. As adults, we are conditioned to put our best foot forward in everything we do, and we tend to have the same expectations of our children. But do you find it challenging to tolerate any flaws in your child? Do you find it difficult that they are not doing things your way? Do you end up criticizing them more than giving them praises? If so, you might want to start asking yourself whether your pursuit of excellence has turned into perfectionism. Expecting perfection from a child is detrimental to their mental health. Instead of thinking how to become better, they constantly focus on themselves being a failure. Children are in the process of being, learning, and becoming. Setting achievable goals and encouraging them along the way and focusing on the process rather than the outcome will be a healthier practice in helping them to become successful adults. Number 7, punishing rather than disciplining your children. What do you do when your child misbehaves? See, there's a difference between punishment and discipline. While punishment focuses on having the child suffer from their misbehavior, discipline involves getting a child to think of the consequences of their actions, empowering them to make better choices in future. Children who constantly receive punishment don't think of ways to make better choices, they just think that they are bad people. Instead of punishing, try setting clear rules, reinforcing good behaviors, and redirecting them from misbehaviors to help them make better choices in future. Thank you for watching.